Hey everyone, welcome और welcome back to my channel। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। आज हम वीडियो देखने वाले हैं Why Apple has failed in India। आप लोगों ने काफ़ी सारे मुझे रीजंस ऑलरेडी बता दिए हैं और मुझे पता है कि एप्पल इतना पॉपुलर नहीं है, आप लोगों को पसंद नहीं है, बट इससे हम वीडियोस करते रहते हैं और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थे। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, मे भी कुछ नया हमें पता चलेगा। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। Hey, welcome back, I'm Lai. And recently I found something strange. Just the other day I was visiting an engineering firm right here in Singapore, and after the visit, their team of engineers, mostly Indians, invited me for lunch. So I went, but as I was talking to them, I realized among 7 of them, none is using an iPhone. So I asked why, and then I realized how unpopular iPhones are among Indians and how unpopular iPhone is in India. I was really eager to find out why. I don't want to make claims that iPhone is not popular in India without backing it up. So here we go. If we look at the statistics, iPhones are popular around the world. Taking a look at iOS market share would give us a good gauge. On average, iOS takes 18.91% of the mobile operating system market share. If we look at iOS market share by region, iOS usage is the highest in North America and Oceania, which amounts to 48%, followed by Europe, in which iOS occupies 24.06% of smartphone market share. In both Asia and South America, iPhone occupies around 10%, and lastly, in Africa, iPhone takes 7% of the market. Well, you might say India is a developing country and iPhones are expensive, so obviously more people in the developed nations will purchase an iPhone than people in the developing nations. You're probably right. But for that, let's look at break countries: Brazil, Russia, India, and China. In Brazil, iPhone takes 11.57% of the market. In Russia, iOS takes 23.51%. In China, iOS takes 21.96%, and finally in India, iOS occupies only a whopping 2.9%, even lower than the average of Africa. So obviously there's something strange, something deeper going on. It's not just about GDP per capita or economic development. So what is it about? Well, first of all, admittedly, price does play a big role in India, especially with so many cheaper alternatives available from the Android side. iPhone 10 in the United States cost $999, but it cost over $1,300 in India after import duty and currency conversion. That's a 30% premium, one of the highest in the world. Apple tried to avoid this premium by opening up its own factory in India, but it only managed to do so last year, and it decided to produce low-end SE version of iPhones. Washington Post commented on this move and said, by marketing inferior products, it may also be insulting Indian customers. I have my differences with Washington Post on many matters, but I agree with them on this fully. Secondly, Apple is facing some very unconventional and aggressive competitors. Just in the last 3 years, the Chinese has taken over India by landslide with their localized strategy. Traditionally, Samsung has a strong lead in the Indian smartphone market, but this situation is changing very rapidly. Xiaomi has just taken over Samsung to be the lead smartphone seller in India end 2017. Oppo and Vivo's strategy of opening stores everywhere is also paying off. They're pushing their smartphones very aggressively by providing high profit margins to sellers. And as a result, sellers favor selling Oppo and Vivo phones because they make more per Oppo or Vivo sold. This new business model is disruptive to the status quo of the industry and is proven to be very effective in populous countries like China and India, because rural customers like to hold and feel the phone before buying it, yet flagship smartphone stores do not reach the vast majority of villages in China or India. Facing this unconventional competition from the Chinese, Samsung is quick to adapt and started opening stores in rural areas. Apple is not. Therefore, despite Tim Cook being very vocal about his plan to conquer the Indian market, Apple has been failing to do so. Lastly, if it comes to the key factor that prevents Apple from succeeding in India, I think it's Apple itself. Apple has been successful sticking with its golden brand, but to the vast majority of new customers in India, over 50 million Indians will own a smartphone for the first time in 2018, Apple's brand means nothing to them. They like to look at specs, features, and iPhone is hardly superior in that regard. And perhaps most importantly, Apple's strength in other markets has made Apple unable to change and adapt in India.
India is a diverse country culturally, religiously, and linguistically, and therefore it requires agility from Apple's side to accommodate these differences. For example, app stores require credit cards to pay for apps, but according to the same Washington Post article, only 1% of the Indian population have credit cards. Additionally, Apple Music is also considered inferior compared to its local competitors such as Savan and Gaana. What about Siri? It hardly recognizes the Indian accent. Apple's other products like the Mac is just outrageously expensive for the market. My point is, what Apple does well in other countries to lock in its customers doesn't work in India. On the contrary, I'm seeing the opposite happening right now. With 2.9% market rate, Apple will find more and more of its potential customers getting familiar with the Android system and with Samsung, Xiaomi, and Oppo. As a result, Apple will find it even harder to penetrate the Indian market in the future when these customers choose to upgrade their phones under the same Android brand because of the familiarity a few years down the road. The reverse will happen to Apple in India when people get comfortable with Google's ecosystem, with Google Assistant, Google Documents, Play Store, and perhaps Google Home. Apple will find it even harder to be popular in India. Apple has a great brand, a brand that is associated with perfection, user-friendliness, and creativity, but in India, Apple has hit the wall. If it's not willing to bend certain rules, not willing to adjust to the diverse culture and language in India, Apple is in trouble. Alright, thank you so much for watching. Hey guys, ये थी वीडियो कैसी लगी आपको? मुझे बहुत पसंद आई। ऑलरेडी इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये वैसा ही दोबारा से कुछ रिपीट हुए थे स्टफ, लेकिन वो तब कमेंट्स में था, हमने वीडियो नहीं देखी थी। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा नुकसान है, लाइक डिसएडवांटेज है एप्पल कंपनी को, क्योंकि इंडियन यूज़र जो है इंटरनेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सोचो एक परसेंटेज, इतनी हाईएस्ट परसेंटेज जो इंटरनेट यूज़ करती है वो तुम्हारा फ़ोन ही यूज़ नहीं करती, उसको पसंद ही नहीं है, उसको वर्दी नहीं लगता उस प्राइस के जो तुम उनको बोल रहे हो लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ऐसा होगा, लाइक अभी हुआ नहीं है लेकिन ये फ्यूचर में होगा। उनको जो उन्होंने कंपनी ओपन की थी इंडिया में, मुझे आज तक समझ नहीं उन्होंने क्यों, लाइक वो ऐसे वाला पता नहीं इसको बोलना कैसे है, उस मॉडल का क्यों किया। वो सबसे थका हुआ मॉडल है आईफोन का, पता नहीं कौन लोग हैं जो बाय भी करते हैं, वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, वो बकवास है, किसी काम का नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने वो क्यों ओपन किया, कोई और क्यों नहीं किया। प्लीज़ अगर आप लोगों को पता तो मुझे बताओ। आप लोग मुझे ऑलरेडी बता चुके कि आपको कोई रीज़न नहीं है एप्पल लेने की। मैं एक और बात भी मुझे लगता है जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनको एप्पल का क्या कहते हैं ना, वो उनको नहीं लगता कि वो एक लग्जरी है। गाइस एक और बात मैंने नोट की है कि जो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनको नहीं लगता कि आईफोन होना अपने पास एक लग्जरी है। वो आप लोग एक फ़ोन को फ़ोन की तरह यूज़ करते हो कि उसका फंक्शंस ये होने चाहिए, ये मुझे इसका फ़ायदा दे रहा है, ओके नहीं दे रहा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका और यूरोप में ये एक लग्जरी ब्रांड कह लो, लग्जरी आइटम है। लोग इसके लिए वो कहते हैं ना ब्रांड के लिए भी बाय करते हैं, ज़्यादातर प्राइस जो वो पे करते हैं वो ब्रांड के लिए ही करते हैं। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो फास्ट भी है, ये वैसे सच है कि वो ज़्यादा फास्टर है। और जो मैं कंप्यूटर एटलीस्ट उनकी बात कर रही हूँ, बट अगेन बहुत सारे अच्छे और भी हैं जो उनकी तरह के होते हैं और उनकी इतनी प्राइस भी हाईएस्ट नहीं होती। और इसकी रीज़न है कि एप्पल जो है अपने ब्रांड के भी पैसे लेता है और एशियन कंट्रीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उधर ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट कि ओ लाइक आईफोन जिसके पास आई थिंक सिर्फ अपने जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो ही आराम से ले लेता है, लेकिन उसको भी लगता है कि नो ये इससे भी बेटर फ़ोन है वहाँ पे एशिया में इतने सारे ब्रांड्स हैं स्मार्टफोन पे। आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी बताया हुआ था कि वो काफ़ी अच्छे हैं और ये वो, और मुझे लगता है वो काफ़ी सक्सेसफुल एशिया में ऑलरेडी हैं। तो आप लोगों को लगता नहीं है कि आप लोगों को आईफोन चाहिए। और एक तो प्राइस भी, ओ माय गॉड, इतनी सीरियसली बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे भी टैक्स के साथ आके यूरोप में बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो मुझे लगता है उनको कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में। इस बार उन्होंने जो लॉन्च किए थे आईफोन, उनमें एक जो कहते हैं सस्ता और चीपर वर्जन था। सीरियसली वो बिल्कुल भी चीप नहीं था और देखने में थके हुए लग रहे थे। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया सीरियसली वो एक्स मार्क्स था जो सबसे एक्सपेंसिव था। और जो दूसरे जो कलर वाले हैं वो अच्छे हैं, बट वो टॉय मुझे वो वो सीरियस फ़ोन नहीं लग रहे थे, मुझे टॉय लग रहे थे, फ़न टाइप के
थे ओके, बट वो भी चीपर नहीं थे। अगर तुमने वो पे करना है तो इससे अच्छा तुम दूसरा ले लो, यू नो। आई डोंट नो, ये उनका चीपर वर्जन था, ऊपर से चीपर होने की वजह से उसमें थोड़ी सी चीज़ें कम है। ये चीज़ें उनको सोचनी पड़ेंगी और पता नहीं क्या वो कर रहे हैं। मैं उनको इतना पसंद करने की कोशिश करती हूँ, बट अगेन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होते हैं। कभी कभी मेरे साथ हो चुका है, लिटरली हो चुका है कि एक प्रॉब्लम हो गई थी गाइस, इतनी वो स्टूपिड प्रॉब्लम थी, आप लोग सोच नहीं सकते, सीरियसली आप लोग सोच नहीं सकते। मेरा फ़ोन मैंने न्यू लिया था ओके, और पासवर्ड मैंने जल्दी में जो लिया था वो बाद में मुझे याद नहीं रहा। मतलब मुझे लगता था मुझे याद है, बट वो आई डोंट नो मैंने वो कौन सा सेव किया था। और क्योंकि मैंने फिंगरप्रिंट्स के साथ ओपन करती थी और मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो मुझे याद नहीं है पासवर्ड। एक बार गलती से मुझे पता चल गया कि यू नो मेरा हाथ पता नहीं क्या था, वो फिंगरप्रिंट से हुआ नहीं, तो पासवर्ड आया वो गलत था। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, लाइक मुझे याद ही नहीं है। तो मैंने ट्राई की और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ट्राई करना चाहती थी। मुझे लग रहा था, मैं इतनी श्योर थी, मुझे पता था कि वो कौन सा वाला है, और वो हो नहीं रहा था और मेरी गलती थी। एनीवे फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 अटैम्प्ट के बाद 5 के बाद पता नहीं कितने अटैम्प्ट के मैंने किए, मैंने काफ़ी सारे कर दिए थे और मैंने पता नहीं क्यों मैंने किया, सीरियसली लाइक क्यों कोई करेगा, तुम्हें ऑलरेडी पता है। एनीवे मैंने ट्राई किया और उसके बाद वो ब्लॉक हो गया। ब्लॉक ये हो गया कि वो तुम्हें टाइम देता है कि ओके 15-10 मिनट 5-10-15 मिनट इस तरह होते हैं, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है और तुम्हें क्या होता है ना, तुम्हें सीरियसली वो सही वाला पासवर्ड डालना पड़ता है, अदरवाइज़ तुम्हें मिलेगा नहीं, तो वो ओपन नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बेबी है कोई वो मुझसे दूर चला गया, मेरा फ़ोन मेरा बेबी है। तो फिर मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। एनीवे मुझे रिस्टोर करना पड़ा, उसकी वजह से मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो लूज़ करनी पड़ी। और इस तरह की चीज़ें एप्पल के साथ होती हैं, जो कि अच्छी एक तरफ से चीज़ है कि कोई यू नो चोर नहीं ले सकता तुम्हारा फ़ोन, है कुछ चोरी करेगा उसको सही वो वक्त ही पड़ेगा फ़ोन के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है, बट अगेन तुम्हारे साथ भी कभी इस तरह हो जाता है तुम फंस जाते हो। एक जो यूट्यूबर है यहाँ पे मैं उसको फॉलो करती हूँ, इटालियन है वो व्लॉग करता था रोज़, और उसके साथ उसका क्या हुआ कि एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया उसके क्या कहते हैं मैकबुक में, और क्या उसको समझ नहीं आई थी क्या था। वो उठा था बेचारा, उसका जॉब है लाइक वो व्लॉग्स करता है, वीडियोस बनाता है, तो उसको नहीं एडिटिंग करनी होती, उसकी जॉब है लिटरली। और बेचारा वो कह रहा था कि वो ब्लैंक था, वो पता नहीं क्या था, उस मैकबुक को क्या तकलीफ़ हो गई थी, बेचारा रो रहा था, ऑलमोस्ट रो रहा था। तो उसके बाद वो एप्पल स्टोर गया, लेकिन एप्पल स्टोर वाले नखरे दिखा रहे थे, वो कह रहे थे नो लाइक 2-3 हफ्ते लगेंगे ये वो। तो उसने कहा कि उन्होंने बिल्कुल उसकी हेल्प नहीं की। फिर वो दूसरी शॉप में गया जो एप्पल की ही प्रोडक्ट्स को यू नो उनके साथ उनको ठीक करती थी, लेकिन वो एप्पल स्टोर नहीं था। तो वहाँ पे कहता था कि 3-4 दिन लगे थे, लेकिन आप सोच नहीं सकते एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था। और वो प्रॉब्लम क्या था कि उसका जो हेडफोन है वो उसने ज़ोर से यू नो वो उसको पता भी नहीं चला और वो लग गया कीबोर्ड से, और वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से लग गया, उसको पता भी नहीं था ये कब हुआ। तो उसको क्या हुआ, उसने पूरा कीबोर्ड चेंज करना पड़ा। उसने कहा कि पुरानी हो गई थी स्क्रीन, उसने वो भी चेंज की, और ये सब मिला के ऑलमोस्ट 1000 यूरो उसको लगे। ऑलरेडी इसने 3000 यूरोज़ पे किए थे 1 साल पहले ही इसके लिए, और दोबारा उसको सिर्फ रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा, और वो ठीक करने के लिए जो प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वो इतना डेलिकेट होता है, उसको अगेन 1000 यूरो देने पड़े थे। ऊपर से जो स्ट्रेस उसको हुआ था कि हो नहीं सकता जल्दी, वो नेक्स्ट लेवल था। और वो ऑलरेडी वो भी कह रहा था कि मैं बहुत फ़ैन हूँ, एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तुम सीरियसली स्लेव हो जाते हो किसी और के, और वो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ऊपर से तुम्हें पे करना पड़ता है इतनी ज़्यादा। सोचो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ को अगर रिपेयर करना पड़ेगा तो उतने ही ज़्यादा पैसे लगेंगे। है गाइस, ये थी मेरी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। मेरे बहुत बहुत आज मम्मा मियाँ आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय।